Dear students, today we will discuss about pollination. In previous video, we have discussed how the male gametophyte developed and how the female gametophyte developed for the purpose of fertilization. So, for the purpose of fertilization, pollination is most important. Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Pollen grain anther भितर तैयारी हबो से ट्रांसफर हबो towards the stigma. Stigma is the part of the uppermost part of the pistil. Stigma टिकी गला परे pollen grain germination हबो तापर pollen tube formation हबो male gamete formation हबो एवं fertilization process चले. So pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. It is two types: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination, what do you mean by self-pollination? Self-pollination means transfer of pollen grain of a flower to the stigmatic surface of own flower or same flower. That is called self-pollination. Self-pollination is again can be studied in two types. One is autogamy and another is gettenogamy. Autogamy, gettenogamy. Autogamy कौन? Autogamy means transfer of pollen grain of a flower to the stigma of same flower. That means गोटे फूल भितर थिबा आंड्रोसियम पार्ट रोची गाइनोसियम पार्ट रोची आंड्रोसियम रो आंथर रो पोलन ग्रेन बाहर की सेही फूलर स्टिग्माटिक सरफेस ऊपर पड़िबा को कहा जाए ऑटोगमी. सेम फ्लावर भितर थिबा आंथर रो पोलन ग्रेन रिलीज हबो सेही फ्लावर रे थिबा stigmatic surface ऊपर पड़िबो. ताल that type of self pollination is called as autogamy. Okay, then gettenogamy means transfer of a pollen grain from one flower to the stigma of another flower of same plant. मनेकर ये गोटे गछ ये फूल एठू पोलन ग्रेन आसीबो सेम प्लांट रो अनदर फ्लावर रो स्टिग्मा ऊपर पड़िबो. एठी मु को कहितले ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन of a flower to the stigmatic surface of same flower. गोटे फूल भितरे पोलन ग्रेन आसीबो सेही फूलर थिबा स्टिग्मा ऊपर पड़े.
that is autogamy. Geitonogamy means transfer of pollen grain of flower released and comes to the stigmatic surface of another flower of same plant. Same plant or another flower particle. That is called geitonogamy. So geitonogamy की some scientists क्रॉस पॉलिनेशन होउछ बोल कहंते. क्रॉस पॉलिनेशन काहे क्रॉस पॉलिनेशन गोटे फूल रु आ गोटे फूल जो कने कि एजेंसी दरकार हुए क्रॉस पॉलिनेशन पय म कहि तुमको. तो एइटु जो पोलन ग्रेन बाहरिबो निश्चित भाबे कि एजेंसी मते दरकार पड़े एई फूल रे पड़िबा पई. तो आको मॉर्फोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहबा, बट जेनेटिकली इट इज ए सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज सेम जीनोम सेम जीन पूल इज ट्रांसफर. सेम प्लांट रो सेम जीन पूल, सेम ए जीन पूल सेम जीन पूल. सो नो cross pollination, but morphologically it seems to be cross pollination. Okay, so geitonogamy means transfer of pollen grain of one flower to the stigma of another flower of same plant. ऑटोगामी कहूची गोटे फूल सेम फूलर पराग रेणु पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट टू दी स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट सेम फ्लावर. बट गeitonogamy कहूची ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू दी स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. दैट इज geitonogamy. Okay, then comes to the cross pollination. Cross pollination is called as genogamy or allogamy. Genogamy or allogamy, cross pollination को technical term cross pollination रो genogamy और allogamy. क्रॉस पॉलिनेशन को कहूची स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मुझे भेज देबी बर्तमान. ओके, जेनोगामी को कहूची ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन of one plant to the stigma of another plant of same species. Transfer of a pollen grain of one plant to the stigma of another plant of same species. गोटे गछर पराग रेणु पोलन ग्रेन ट्रांसफर हब अन्य प्लांट रो फूलर स्टिग्मा. दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. तेणु क्रॉस पॉलिनेशन पाई गोटे एजेंसी दरकार हुए टू ट्रांसफर दी पोलन ग्रेन्स. गोटे गछर प्लांट रो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हब आउ गोटे प्लांट रो स्टिग्मेटिक पड़िबो. दैट रिक्वायर्ड सम एजेंसीज. टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज, टू टाइप्स ऑफ एजेंसी. इट इज abiotic agency, abiotic and biotic. Agencies must required for cross pollination. But
But in self-pollination, autogamy, agency is not required. In getonogamy, agency rarely required. So in abiotic agencies are wind and water. Wind agency जदि हम pollination ताल ताको हमें कहबा एनेमोफिली. वाटर को जदि abiotic agency रे परबा ताल से प्रकार pollination को हमें कहबा हाइड्रोफिली. Anemophily, hydrophily, and that flower which is carrying the wind pollination, wind abiotic pollination agency, that flower is called anemophilous flower, and that like that water by agency water, that flower is hydrophilous flower. Then biotic agency are very clear. Wind होची एनेमोफिली, वाटर होची हाइड्रोफिली. रब करूची बायोटिक इंसेक्ट. जदि इंसेक्ट द्वारा इंसेक्ट एजेंसी माध्यम रे ट्रांसफर हुए पोलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड एंटेमोफिली. एंटेमोफिली. सेमती जदि बैट द्वारा हुए देन चिरेप्ट्रोफिली. जदि बार्ड द्वारा हुए देन ऑर्निथोफिली. जदि स्नेल द्वारा मध्य किछि क्रॉस पोलिनेशन एजेंसी रूपे काम करे क्रॉस पोलिनेशन रे स्नेल, दैट इज कॉल्ड मालाकोफिली. इंसेक्ट ऑर्निथोफिली. बार्ड द्वारा जदि एजेंसी रूपे बार्ड काम करे क्रॉस पोलिनेशन पाई, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. बैट जदि एजेंसी रूपे काम करे क्रॉस पोलिनेशन चिरेप्ट्रोफिली. जदि इंसेक्ट काम करे ताले एंटेमोफिली. जदि बार्ड काम करे ऑर्निथोफिली. जदि स्नेल काम करे एजेंसी रूपे क्रॉस पोलिनेशन पाई, दैट इज कॉल्ड मालाकोफिली. Next video we will discuss the advantages of self pollination and disadvantages of self pollination and the adaptation of self pollination. In next video we will discuss the adaptation of self pollination and cross pollination, advantages and disadvantages of self pollination and cross pollination. Okay, thank you.